Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic for discussion is clause. इससे पहले कि हम क्लास को डिस्कस करें हमें पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. So subject and predicate. The subject of a sentence is what or whom the sentence is about, and predicate is the part of a sentence or a clause that tells us what the subject is doing or what the subject is. The predicate must contain a verb, right? The subject of the sentence is what or whom the sentence is about, and a predicate is the part of a sentence or a clause that tells us what the subject is doing or what the subject is. The predicate must contain a verb. So जो नीचे sentences है हमें पता चल अंडरस्टैंड हो जाएगा कि what is subject और what is predicate. Example, the weather was cold. यहाँ पे जो weather है this is subject, was cold. It tells something about the weather, so this is predicate. The flowers smell nice. Flowers यहाँ पे subject है. Smell nice. It tells about this flowers, so this is predicate. Rashid won the prize. Rashid subject है and won the prize predicate है. The sun was shining brightly. Sun यहाँ पे subject है, was shining brightly. This is predicate. My brother serves in the education department. My brother यहाँ पे जो है this is subject and serves in the education department, this is predicate. Now clause क्या है? A clause is a group of words that contains both a subject and a predicate. हमें यहाँ पे यानी clause वो group of words है जिसमें subject which contains both subject and predicate a verb. अब हमारे पास examples हैं, ज़रा देखिए इन examples को. I graduated last year. This is one clause sentence. When I came here, I saw him. This is two clause sentence. और तीसरा एक है, ज़रा देखिए आप. When I came here, I saw him and he greeted me. This is three clause sentence. इसमें three clause हैं. ऊपर वाले में when I came here, I saw him. यहाँ पे दो clause हैं and I और first जो है I graduated last year. यहाँ पे वन क्लास सेंटेंस है. फर्स्ट क्लास में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है. दो क्लास में दोनों क्लास दूसरे सेंटेंस में दोनों क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है. व्हेन आई केम हियर इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट. आई सॉ हिम इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट. आई सब्जेक्ट सॉ हिम प्रेडिकेट एंड ही ग्रीटेड मी ही सब्जेक्ट ग्रीटेड मी यहाँ पे प्रेडिकेट है. सो इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट है. सो now what is independent clause? Independent clause or complete sentences. Independent clause जो होते हैं वो complete sentences होते हैं. They can stand alone, right, and express a complete thought. So independent clauses क्या होते हैं? They express a complete thought. Independent clauses express a complete thought. उनमें they express a complete thought. They describe a complete thought. For example, ज़रा देखिए, आई वॉन्ट सम शुगर. कंप्लीट थाट है इसमें. रशीद इज़ ए गुड क्रिकेट प्लेयर. रशीद एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर है. ये हम भी एक कंप्लीट थाट है. आई वेंट टू जम्मू. मैं जम्मू चला गया. सो यहाँ पे जो थाट है दिस इज़ ए कंप्लीट थाट. सो दीज क्लॉज आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. अब हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ज़रा देखिए आप. डिपेंडेंट क्लॉज कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट बट दे डू नॉट एक्सप्रेस ए कम्प्लीट थाट. डिपेंडेंट क्लास में भी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है बट दे डू नॉट एक्सप्रेस ए कम्प्लीट थाट. वो एक्सप्रेस ए कम्प्लीट थाट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. व्हेन इट इज़ रेनिंग सो इट इज़ नॉट ए कम्प्लीट थाट. व्हेन इट इज़ रेनिंग क्या होगा फिर? ये इनकम्प्लीट थाट है. बिकॉज यू आर लेट, आप लेट थे. सो इसलिए क्या फिर कंप्लीट नहीं है. बिफोर यू गो टू बेड, इससे पहले क्या आप सोने के लिए जाएंगे तो फिर क्या. सो दैट मीन्स ये डिपेंडेंट क्लास में इसमें कंप्लीट थाट नहीं है. ये जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसमें कंप्लीट थाट होता है और जो डिपेंडेंट क्लास है इसमें इनकम्प्लीट थाट है. सो ज़रा देखिए आप, यहाँ पे हमने लिखा है ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कंटेन बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब बट they cannot stand alone. They cannot stand alone. So they do not express a complete thought. कहाँ पे जो मैंने ऊपर अभी when it is raining because you were late before
यू गो टू बेड, इनमें कंप्लीट थॉट नहीं है, बट दे कैन नॉट स्टैंड, but they cannot stand alone, so they do not express a complete thought. अब ज़रा इन सेंटेंस पे देखिए आप, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंस पे आप ज़रा ठीक तरह से गौर कीजिए ताकि आप अंडरस्टैंड करेंगे। ही नोज़ मी वेल एंड ही लाइक्स मी। ही नोज़ मी वेल, ही नोज़ मी वेल एंड ही लाइक्स मी। ज़रा अगर आप इसमें देखेंगे, ही नोज़ मी वेल कंप्लीट थाट है, ही लाइक्स मी ये भी कंप्लीट थाट है। डू यू नो मी वायर ही, डू यू नो मी वायर ही लिव्स। ज़रा आप इसमें देखिए, डू यू नो मी वायर ही लिव्स। इस तरह दूसरा है, दिस इज़ द बॉय हु वन द प्राइज़। फर्स्ट में मैंने कंप्लीट किया, इसमें भी ही नोज़ मी वेल एक कंप्लीट थाट है, इंडिपेंडेंट थाट है। ही लाइक्स मी ये भी एक इंडिपेंडेंट थाट है। ज़रा आप इसमें ज़रा देखिए, इंडिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ही नोज़ मी, सो दिस इज़ कंप्लीट थाट एंड ही लाइक्स मी। यहाँ पे भी एक कंप्लीट थाट है। डू यू नो वायर ही लिव्स, डू यू नो। अब इसमें ज़रा देखिए आप, डू यू नो क्या कंप्लीट थाट है या नहीं है। दिस इज़ द बॉय हु वन द प्राइज़, दिस इज़ द बॉय, ये इसमें कौन सा थाट है ज़रा आप हम देखें, ठीक तरह से अंडरस्टैंड करें। ईच ऑफ द अब सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज शोन बिलो। ज़रा देखिए आप, ही नोज़ मी वेल, ही लाइक्स मी। नंबर सेकंड जो सेंटेंस ऊपर था, डू यू नो, डू यू नो, फिर है बी इसका पार्ट हमने बनाया यहाँ पे, वायर ही लिव्स, राइट। तीसरा, दिस इज़ द बॉय हु वन द प्राइज़, ये एक पार्ट बनाया हमने, दिस इज़ द बॉय हु वन द प्राइज़। इस तरह फोर पार्ट जो है, फोर सेंटेंस नंबर 4, ही वेटेड फॉर मी, he waited for me till I returned. So ज़रा आप अंडरस्टैंड कीजिए, इट्स क्लियर दैट ईच ऑफ द अबव ईच पार्ट्स हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी हर एक पार्ट में, ये हमने ऊपर 4 सेंटेंसेस थे, लेकिन हमने उनको अब यहाँ पे 8 सेंटेंसेस 8 क्लास बनाए। अब ज़रा देखिए, इट इज़ क्लियर दैट इन ईच ऑफ द अबव 8 पार्ट्स हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नंबर फर्स्ट में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ए पार्ट में भी, बी पार्ट में भी। सेंटेंस नंबर सेकंड में ये जो क्लास है इसमें भी सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, और थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। इस तरह ज़रा देखिए, दो ईच पार्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड क्लास, राइट। इन सेंटेंस नंबर फर्स्ट, ईच क्लास कैन स्टैंड अलोन। जिस तरह मैंने आपको अभी आपके सामने डिस्क्राइब किया, अंडरस्टैंड किया आपको कि ही नोज़ मी वेल, ईच क्लास कैन स्टैंड अलोन। और इसी तरह as a separate sentence, can stand alone as a separate sentence. It does not depend on the other part of the sentence in order to make its meaning. ये दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है ताकि आप ये माना बनाएं, इसको अपने मतलब कंप्लीट हो जाए, ये नहीं, ये उस पर डिपेंड, दूसरे पे डिपेंड नहीं है। सो इट कन्वेज एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ थॉट, राइट। It conveys an independent unit of thought. Such a clause is called a principal clause or the main clause. इसको हम principal clause कहते हैं और या main clause कहते हैं। In sentence number 1, each clause stands alone. Each clause stands alone as a separate sentence. It does not depend on the other part of the sentence in order to make its meaning clear. It conveys an independent unit of thought. Such a clause is called the principal clause or the main clause. इसको हम principal clause कहते हैं या main clause कहते हैं। So नंबर सेकंड, ये जो एग्जांपल्स हैं, ज़रा 2, 3, 4 में आप एग्जांपल्स में ज़रा देखिए। इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस एट 2, 3 and 4 पार्ट, ए इज़ होली इंडिपेंडेंट। जो इसका ए पार्ट है, फॉर एग्जांपल डू यू नो, इट इज़ इंडिपेंडेंट। इसी तरह तीसरे में दिस इज़ द बॉय, ये भी इंडिपेंडेंट है। फोर्थ में ही वेटेड फॉर मी, ये भी इंडिपेंडेंट है। मगर इसका जो बी पार्ट है 2 का, वायर ही लिव्स, डू यू नो, इंडिपेंडेंट है। वायर ही लिव्स ये डिपेंड्स ऑन ए। इस तरह हु वन द प्राइज़, यहाँ ये डिपेंडेंट है ऑन फर्स्ट पे, ए पार्ट पे। इस तरह टिल आई रिटर्न ये डिपेंडेंट है, फोर्थ पार्ट पे है। सो इन ईच ऑफ द सेंटेंस 2, 3 and 4 part A is wholly independent. It does not look to part B, right, to make its meaning clear. On the other hand, part B in each of the sentences cannot stand by itself. It depends on part E to make its meaning clear, right? Such a clause is called the subordinate clause or dependent clause. इस clause को हम subordinate clause कहते हैं या dependent clause कहते हैं। So which depends on the independent clause, so which depends on the main clause, that is called the subordinate clause or dependent clause.
So in sentence first, the clause he likes me is joined to the principal clause by the coordinating conjunction and this is called coordinate clause. इसको हम coordinate clause कहते हैं. So right, in sentence first the clause he likes me is joined to the in sentence number first he he knows me well and he likes me. He knows me well and he likes me. In sentence one, the clause first he likes me is joined to the principal clause by the coordinating conjunction and this is called coordinate clause. इसको हम coordinate clause कहते हैं. He likes me, he knows me well and he likes me. It is joined to the principal clause by the coordinating clause. Is joined to the principal clause by the coordinating conjunction and it has been joined by the coordinating conjunction and this is called coordinate clause. Now coordinate clause क्या है? Coordinate clause क्या है? An independent clause that is connected to another one of equal importance. Right? इसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड कीजिए. An independent clause that is connected to another one of equal importance. जो दूसरी क्लास से कनेक्टेड हो बट वो क्लास भी ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस हो, उसकी इम्पोर्टेंस उसी जैसे है जिस तरह ये इंडिपेंडेंट क्लास फर्स्ट क्लास हो. ऑफन विद ए कंजंक्शन सच एज कंजंक्शन किस कंजंक्शन से? एंड से, बट से या और से. तो इसको हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं. एन इंडिपेंडेंट क्लास दैट इज कनेक्टेड टू अनदर वन ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफन विद ए कंजंक्शन सच एज and, but, या or say. Now for example, it was apple blossom time and the days were getting warm. It was apple blossom time. Independent clause है, the days were getting warm. So these two clauses have been joined by and. और एक ज़रा देखिए, I was not a fan of most vegetables but I do not mind peas. और एक I do not mind peas एक क्लास है. I was not a fan of most vegetables और एक क्लास है. These two classes have been joined by conjunction but, so this is coordinate clause. I went to playground but I do not play it. But यहाँ पे this has been joined by this but, so this is coordinate. These are coordinate clause. I want to buy a phone but I do not have enough money. बट यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है दो क्लास को ज्वाइन करने के लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास. होप आपने ये ठीक तरह से अंडरस्टैंड किया होगा. विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.